एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो हम लोगों ने सो फार अभी तक फॉर लूप चेक किया है, जिसके अंदर हम लोग तीन स्टेटमेंट्स रखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर कंडीशन रखते हैं, फिर हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, जिससे वो इनिशियलाइजेशन की वैल्यू ऊपर या नीचे हो, लाइक सो दैट इट कैन बी चेंज्ड। ओके, देन वी स्टडीड अबाउट फॉर लूप एंड फॉर ऑफ लूप। सो फॉरेन लूप वर्क करता है जिसके अंदर वो आपको कीज़ प्रोवाइड करता है, फॉर ऑफ लूप आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। सो वी हैव कवर्ड सो फार, हम लोगों ने 3 लूप्स कवर किए। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज़ दैट वी हैव वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ ऑलवेज वेरी रिस्की to use while loop, okay, because we also often sometimes we try to call it as an infinite loop also. Okay, so whenever you are using while loop, आपको make sure करना है कि like you are putting the condition properly so that it never ends up in an infinite loop. ये किसी इनफाइनाइट लूप के अंदर ना चला जाए, इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप हमेशा कंडीशन हमेशा ऐड कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डू वाइल लूप में हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, हाउ डू वी यूज़ डू वाइल लूप। ओके, सो व्हाट हैपन्स इन वाइल लूप इज दैट this is your while loop. You will create while loop like this, okay, and inside this one you will write down a condition. Okay, and then after this you will start the bracket, and whatever the code execution you want to do, okay, you will do the code execution over here. This is your code execution. Okay, so at the end of this entire function, whatever code execution you want to do, at the end of this you are going to put your increment or decrement. Okay, if you are not putting this increment or decrement, then your value उस कंडीशन को कभी भी रीच नहीं कर पाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हम लोग वाइल लूप क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक लेट x इक्वल्स टू 1, ओके, एंड देन आई हैव while loop that it should be running only whenever x is less than 4. Okay, x is less than 4 like this. Okay, then I have started the bracket. So in this one I want to just log value of x. Okay, so we can write down console.log and then value of x. Okay, after this one I want to write down, okay fine, after once this is completed then you do x plus plus. Okay, if you are doing x plus plus, which means first of all it is going to print x. ये x का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। इस सिचुएशन में इसने फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम पे 1 प्रिंट किया। अब x का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया है, इस सिचुएशन में यहाँ पे x का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, वापस यहाँ पे जाएगा। इट विल वेरीफाई द कंडीशन इफ द कंडीशन इज करेक्ट और नॉट। इफ द कंडीशन विल सेटिस्फाई, विच मीन येस 2 is less than 4, so again it will satisfy the condition, it will go inside the loop execution and it is going to print 2 and then 3 and then so on. Okay, so far in this while loop it will print only till 3. ओके, सो इस तरह से आपका वाइल लूप वर्क करता है। हम लोग मल्टीपल सिनेरियोज पढ़ते हैं कि हम लोग किस तरह से कंडीशन दे सकते हैं, हाउ कैन वी पुट इंक्रीमेंट वैल्यूज़, हाउ कैन वी पुट डिक्रीमेंट वैल्यूज़ एंड सो ऑन। ओके, but before we go deep dive into while loop to understand it by coding and everything, I would like to first of all explain कि do while loop भी किस तरह से वर्क करता है। ओके, so what happens is that we say कि while loop के अंदर until unless the condition is not matching, it is not going to get executed, right? The code execution will never ever happen until unless the condition is not getting matched. Okay, but in case of do while loop what happens is that condition आपका for the first time of execution, the condition will not be checked and the code will be executed. Okay, so always remember this thing ki like in the interviews it often gets asked like what is the difference between while loop and do while loop. So always say that while loop will be executed only and only if the condition is satisfied. ओके, अगर आपका कंडीशन करेक्ट है तो ही आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट करता है। बट इन केस ऑफ डू वाइल लूप व्हाट हैपन्स इज दैट if the condition is even not satisfied, at least for once, for the first time, the do while loop will get executed. So for the first time do while loop execute होगा, condition उसके बाद में चेक करते हैं और उसके बाद में फिर वो डिसाइड करते हैं कि कंडीशन करेक्ट है तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा या नहीं होगा, राइट। पर एटलीस्ट फर्स्ट टाइम पर आपका डू वाइल लूप हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ओके, बट इट हैपन्स विद ऑल द अदर लूप्स ऑल्सो कि आपका सबसे पहले कंडीशन चेक होता है उसके बाद में ही एग्जीक्यूशन होता है, राइट। But in case of do while loop,
फर्स्ट एग्जीक्यूशन हमेशा होता है और उसके बाद में मतलब कंडीशन चेक करके हम लोग नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के बारे में ट्रैक करते हैं. ओके, सो डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है. यू हैव ओवर हियर, सबसे पहले वी राइट डाउन डू एंड देन वी हैव ब्रैकेट्स, देन वी हैव कोड लॉजिक, whatever code execution you want to put over here. यहाँ पे you put all that code logic like basic console.log statements, all those statements you can put over here, and then you put your increment or decrement values over here. Once this is completed, then later you will put your while, and then over here inside this one you will put your condition. So this is how your do while loop looks like. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली हम लोग चेक करते हैं कि वाइल लूप को किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि डू वाइल लूप को किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, बट लाइक वन मोर टाइम, सो हाउ द कोड एग्जीक्यूशन विल हैपन इन केस ऑफ डू वाइल लूप इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम इनसाइड दिस वन. ओके, सो फर्स्ट टाइम पे इट विल गेट एग्जीक्यूटेड, दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड. ओके, then it will go down, the value will get incremented, value will get incremented or decremented हो जाएगा. After that it is going to check the condition. अब अगर condition correct है then it will again go back inside the do loop. okay, do code block. okay, फिर ये उसको रन करेगा, फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर वापस कंडीशन चेक करेगा एंड लाइक दिस. ओके, सो एटलीस्ट ये होगा कि आपको जो फर्स्ट टाइम पे जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा होगा. एटलीस्ट फर्स्ट वेरिएशन ऑफ एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज हैपन. ओके, अब हम लोग उसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है. अरे सो दिस इज़ आवर VS कोड. एक फ़ाइल क्रिएट कर लेती हूँ मैं इसके अंदर, while do while .js, do while .js like this. ठीक है, so what will I do over here is this. First of all, let's create the while loop. Let's understand how the while loop works. Okay, so I'll create one variable. I'll just give it x equals to 1. okay, I'll create a while loop now. I will put down, always remember that inside the while loop put down the condition. okay, inside the bracket you have to put down the condition. So I will put x less than 4. okay, inside this one I just want to log the x का value. यहाँ पे x का value print करो. and इसके बाद में what if अगर मैं यहाँ पर कोई भी वो नहीं ऐड कर रही हो, लाइक मैंने यहाँ पर कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं ऐड किया है, तो इस केस के अंदर दिस वाइल लूप विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ इफ एल्स लूप. ओके, इफ द कंडीशन इज नॉट मैचिंग, विच इज करेंटली नॉट मैचिंग बिकॉज 1, it is matching currently because 1 is less than 4, so it will print this one. okay, but since you have not put down any increment or decrement condition over here, तो अभी इस situation में it will go inside a infinite loop. Since 1 हमेशा will be less than 4, so it will be keep on running and keep on running. So you can write down like this, do while, and then if you can see over here, ये वन continuously print करता जा रहा है and then करता जा रहा है. okay, since we are in terminal now, तो मैं इसको command से या control से करके stop कर सकती हूँ and then I can stop this execution. okay, अभी अगर आपको ये नहीं करना है, if you want to avoid this thing that you do not want कि कभी भी infinite loop में जाए, always make sure you are putting increment and decrement. okay, so what if I put over here I++, okay, which means the value will be incremented after every execution. Now let's run this code, do while.js, I is not defined, sorry, x++, yes, so 1, 2 and then 3. Once the value is incremented till 3, so now it has become 4. Now again it will go, no, it is not correct, so then that is why it will come down. okay, so it will come down and there will be no more execution will be occurred. okay, so you can put one statement over here also कि are we end of the loop or outside of the loop or not. so जैसे आपका ये loop execution ख़त्म होगा 1 to 3 के बाद में, उसके बाद में then your loop is ended like this. ठीक है, so इस तरह से आपका while loop work करता है. अगर मैं less than 4 करूँ, अगर मैं यहाँ पे x++ की जगह x माइनस कर दूँ, which means 1 बन जाएगा, फिर 0, देन -1, -2, -3, तो वो माइनस वाली स्टेटमेंट के अंदर, वर्ड्स के अंदर कंटिन्यूसली चलता जाएगा. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या होगा आपके पास में, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी एंड बिकॉज ऑफ विच इट विल अगेन गो इनसाइड एन इनफाइनाइट लूप. सो वी वांट टू अवॉइड दैट, हमें वो चीज़ नहीं करनी है. ठीक है, तो आपको अपनी कंडीशन को देख करके आपको ये वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू प्रॉपरली वहाँ पर पुट करनी, प्रॉपरली वहाँ पर ऐड करनी है. ओके,
सो दिस इज़ हाउ योर वाइल लूप वर्क्स. ओके, अभी अगर हम लोग बात करते हैं डू वाइल लूप की. ओके, सो डू वाइल लूप क्या कहता है दैट योर आपका कोड एग्जीक्यूशन एटलीस्ट एक बार तो हमेशा वर्क करेगा ही करेगा. ओके, सो लेट x इज इक्वल्स टू 1. ओके, एंड देन मैं यहाँ पे डू वाइल लूप के अंदर मैं ये कहती हूँ कि दैट फर्स्ट मैं लॉग करती हूँ दैट x is initiated का मतलब what is the meaning of initiated, which means you have provided value to a variable, that is known as initiation inside JavaScript. Okay, so we have initiated the variable, हमने यहाँ पे कुछ code logic add कर दिया है. After this one I can increment or decrement the value. Okay, so for example if I do increment of the value, okay, and then I put a while condition over here that keep on executing this value, and I can put x over here like we are printing x also. Okay, now I can add one condition over here inside the while loop saying ki in what situation it should be keep on running. Okay, so since we are doing plus plus, so make sure we are putting a large value. So if x is less than 5 by the time you keep on running this execution. Okay, so if I am doing this thing, x is 1 2 3 and then 4. Okay, if I say x plus plus and then I say over here x should be less than 0. Okay, so in this case this is not correct, this condition is not satisfied. 1 is not less than 0. Okay, or some negative to make it more precise. So 1 is not less than any negative number, right? It is not, but still this statement will get executed. So let's run this code. So it will get executed for the first time. So always remember this thing that whenever you are having while loop, तो आपको मेक श्योर करना है दैट यू पुटिंग डाउन द कंडीशन प्रॉपरली. ठीक है, आप अपना कंडीशन हमेशा प्रॉपरली लिख रहे हो. आप जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हो यहाँ पर वैल्यूज़ को, वो प्रॉपरली कर रहे हो. दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो आप कर रहे हो ये आप प्रॉपरली कर रहे हो वाइल लूप की कंडीशन के अकॉर्डिंग. ओके, एंड देन लेटर आपका जो डू वाइल लूप होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि वाइल और डू वाइल के अंदर क्या डिफरेंस है. ओके, सो यही डिफरेंस है कि डू वाइल लूप बिना कंडीशन को चेक किए एटलीस्ट फर्स्ट टाइम पर तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा. दैट एटलीस्ट योर डू वाइल लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम. दो कंडीशन मैचेस or it does not match, but it will make sure that it will get executed for the first time. Okay, but none other loop do the same thing. Okay, while loop के अंदर it doesn't happen. It checks the condition first and then only it gets executed. Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching, and yeah, that's it.